क्या करें, आए? अच्छा, ओके फाइन, ओके फाइन, डन. Okay, am I audible? Yes. Okay, that's great. Okay, so we'll be discussing questions of geography today. When I talk about geography questions, it starts from first, that discuss the consequences of climate change on the food security in the tropical countries. Okay, तो क्वेश्चन सिंपल है, 10 मार्क का है. आपको कॉन्सिक्वेंस बताना है क्लाइमेट चेंज का ऑन दी फूड सिक्योरिटी and in the tropical countries. Now what would be one of the mistakes that student would be doing is they would think about the consequences of climate change on food security and they will forget about tropical countries. तो tropical countries के बारे में भूल जाएंगे. You have to actually give the examples of tropical countries. जितनी भी tropical countries है जहाँ पे आपको लगता है food security is getting compromised because of climate change. So firstly you will compromise on this tropical countries. इसके examples नहीं भूलने. No tropical countries, talk about, see, climate change is causing problems of food security in Bangladesh, in Pakistan, in India, जितनी भी tropical countries हैं, so you can name them, right? तो ये world का question है. One. Second, जब आप सुनते हैं when you hear climate change is causing problems to food security, okay, what comes to your mind? What comes to your mind? See, you are telling me what comes to your mind is global warming. Okay, so global warming, best, hurricane, आगे heat wave, cold wave, और हाँ floods and droughts. Now, और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे सारा टाइम ये लिखोगे फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज. आपने इस डायमेंशन को ओपन अप किया बट आपने इसके डायमेंशन को ओपन अप नहीं किया, बिकॉज फॉर यू फूड सिक्योरिटी ओनली मीन्स कॉम्प्रोमाइज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, कि फूड अवेलेबल कम हो जाएगा. ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज, लॉस ऑफ यील्ड. हरिकेन और साइक्लोन, द डिस्ट्रॉइंग ऑफ कोस्टल क्रॉप्स. हीट वेव, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे. आपके लिए फूड सिक्योरिटी सिर्फ फूड अवेलेबिलिटी है, बट फूड सिक्योरिटी इज नॉट ओनली अबाउट फूड अवेलेबिलिटी. फूड सिक्योरिटी के 4 डायमेंशन हैं. इट्स अबाउट फूड अवेलेबिलिटी, इट्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबली नहीं होगा फूड. इमेजिन नो राइस, rate rise of wheat because of war, wheat was not accessible, फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो एक्सेसिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी. ठीक है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स leads to compromise of accessibility to the food to many of the vulnerable section. Africa, climate change related resource conflicts हैं, उसके कारण कई vulnerable population को accessible नहीं होता. So it's not just food availability, it is also about food accessibility. It is also about food affordability. Very good. Now you are talking. It is also about food affordability. Yes, it is also about food affordability. Climate change के लिए सबसे vulnerable population कौन सी? Farmers. Agriculture. Their crops are getting destroyed. Their livelihood is getting destroyed. So once you destroy their livelihood, do you think they can afford food? They themselves they can't. Tribal population, construction workers. तो उनके लिए क्या compromise हो रहे? उनके लिए accessibility compromise हो रही. तो accessibility is also getting compromised because of climate change related losses. Affordability is getting compromised because they cannot afford food. So ये वाला dimensions is something that adds. तो एक अच्छा, not only that, also about somebody of you said quality. It is also about not only food security, is also about nutritional security. Hidden hunger. Nutritional security is also a component of food security. So the concept of hidden hunger, कि आपका food security compromise हो रहा है climate change के कारण, quality कम हुई, nutrients कम हुए, तो आपकी nutritional security compromise हुई. Water availability कम हुई, तो quality of the crops खराब हुई. So whenever you hear the word food security,
ठीक है, आप ना आपके दिमाग में पैटर्न बन जाना चाहिए कुछ चीज़ों का, यू शुड हैव सर्टेन पैटर्न्स इन माइंड। जब भी वर्ड सुनो आर्ट एंड कल्चर, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स आर्ट एंड कल्चर, जब आर्ट एंड फॉर दैट मैटर ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स कल्चर, जब भी कल्चर सुनो तो कल्चर क्या होता है वो 10 कीवर्ड्स पता होने चाहिए। कल्चर मीन्स फूड, कल्चर मीन्स ड्रेस, कल्चर मीन्स फेस्टिवल, कल्चर मीन्स मूवीज, कल्चर मीन्स वैल्यूज, कल्चर मीन्स इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, वैल्यूज, ट्रेडिशंस। तो कल्चर जहां सुनो तो ये 10 पॉइंट्स आ जाने चाहिए, इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। इफ यू हैव द requisite framework in mind, then it becomes very easy. So whenever you hear the word food security, right, whenever you hear the word food security, you will have to always talk about food availability, food accessibility, food affordability, food utilization and nutritional security. फूड सिक्योरिटी जहां दिखे, सिर्फ फूड अवेलेबिलिटी पे मत रहना, सिर्फ अवेलेबिलिटी पे मत रहना। Talk about security in the context of nutritional security. Talk about affordability. Talk about accessibility. Also talk about utilization. Food utilization capacity. दिमाग में एक फ्रेमवर्क देखिए कि जब भी, अच्छा ये कंपोनेंट किसने दिया? इस कंपोनेंट्स हैव बीन गिवन बाय FAO. तो इसके पीछे एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कंपोनेंट दिया। FAO की डेफिनेशन है, फूड सिक्योरिटी मीन्स food is available to all population at all times. Available है to all population at all times and is accessible, affordable, quality food. तो definition ही इतनी broad है, सिर्फ availability की बात नहीं हो रही। One. दूसरी गलती जो करोगे, I was knowing कि ये गलती करोगे, यही बोलोगे और यहाँ पे नहीं आओगे। तीसरी गलती जो करोगे वो ये करोगे, हाँ पहले तो ट्रॉपिकल कंट्रीज नहीं बोलोगे, सिर्फ ये बताओगे, ये नहीं बताओगे, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती जो करोगे वो ये करोगे कि एग्रीकल्चर आपके हिसाब से क्या है? आई जनरली टेल दिस इन माय क्लासेस आल्सो, एग्रीकल्चर फॉर यू इज फूड ग्रेन, इट इज नॉट जस्ट फूड ग्रेन, एग्रीकल्चर मीन्स ऑल्सो अलाइड एक्टिविटीज। सो व्हाई कांट आई राइट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और मरीन हीट वेव्स ऑन फिशरीज? व्हाई कांट आई टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वेव ऑन लाइव स्टॉक्स? सो एग्रीकल्चर does not simply mean food grains. Agriculture means allied activities also, fisheries, livestock, apiculture, horticulture, top दो ये schemes। समझ आए? तो क्या गलती करनी है? So here it's, how do you start off an introduction? Definition is good enough or a fact is good enough that 1 degree Celsius rise in global warming affects 1.7% of yield as per FAO. Definition हमने देख ली, food security की definition। डायमेंशंस, अच्छा इंट्रोडक्शन डन। डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में बताना, वर्ल्ड मैप बनाना, ट्रॉपिकल कंट्रीज बताना, उधर बताना कौन सी क्रॉप इफेक्ट हो रहे हैं। टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर, टॉक अबाउट वेजिटेशन, टॉक अबाउट फिशरीज, टॉक अबाउट लाइव स्टॉक, एक एक कंट्री में। मेक योर आंसर कंटेंट हैवी एंड देन यू स्ट्रक्चर योर आंसर लाइक दिस। या तो फिर आप डायग्राम के बाजू में सिर्फ कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी बाय FAO। Introduction, diagram can be map and the species name or the crop's name or the definition and the components of the food security. And then in your answer try to address not just this but also these dimensions. Food availability is not simply food security. It is also about utilization, accessibility, nutritional security, affordability, right? तो ये आपके आंसर को अलग बनाता है दूसरों के आंसर से। Conclusion. What kind of confusion? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? What is the question that they have asked you? The question they have asked you: discuss the consequences of food security of the climate change on food security in the tropical countries. Climate change आपकी food security compromise कर रही है tropical countries में। मैंने बता दिया food security क्या है, मैंने दिखा दिया कहाँ compromise हो रही है मैप पे, मैंने dimensions भी बता दिए food security की और कैसे climate change इन सब dimensions को impact कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? Solutions. What are solutions? Climate smart agriculture, precision agriculture, climate smart agriculture, drought resistant seeds. आपकी ये श्री अन्ना मिलेट्स मार्च में था न्यूज़ में, ठीक है? तो ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, टॉक अबाउट SDG 2, ठीक है? 0 poverty, 0 hunger. You will have to
talk about that. Talk about land degradation neutrality. We can talk about these factors. समझ आया क्या गलती करो अगर क्या additional चाहिए, क्या dimension चाहिए. This was your question number 4. About question number 5. Why is world today confronted with the crisis of availability and access to fresh water resource? ठीक है, world आज क्यों confronted है? Okay. Why is the world today confronted with? Why is the world today confronted with crisis of availability and accessibility to the fresh water resources? Generally resources पे land resource पे question या fresh water resource पे question आता ही है. There are many resources, biotic resource, mineral resources, fresh water resources, land resources, but they keep major focus on the fresh water resources and the land resources. So fresh water resource यानी क्या? Simple. We'll try to break it. Fresh water resource यानी क्या? अच्छा, drinking water और yes, now you're coming. Rivers, lakes, groundwater. We did know ice caps, groundwater, lakes, atmosphere, rivers. ठीक है. इसके अलावा lake, rivers, groundwater, rainwater, fresh water ही है. So you have these as the fresh water resources. Groundwater, glaciers, that is ice. I have not written glaciers. Glaciers, groundwater, lakes and ponds. ये तो fresh water है. अब question क्या है? You will have to actually open up dimensions. Like you opened up for climate change, open up more dimensions. The question is that why is the world today confronted? Why is the world today confronted with the crisis of availability and access to the fresh water resource? मुझे बताओ आज वर्ल्ड में क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर क्यों है? मेरा पहले फ्रेश वाटर ये है. हाँ, अब इस पे बात करो. यू टॉक अबाउट ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर, टॉक अबाउट pollution of the river, pollution of the lakes, lack of conservation of the rain water harvesting, lack of conservation of the rain water को कंजर्व नहीं कर रहे हो, उसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हो, जितनी रिवर्स है उसको पोल्यूट कर रहे हो, लेक का पोल्यूशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियल मेल्टिंग कर रहा है. ठीक है, एंड यू हैव टू राइट एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स. I would have started off with the fact. अब fresh water पूछ रहा है, right? Why is the world today confronted with the crisis of availability and accessibility of the fresh water? आज world पे crisis है availability और accessibility of the fresh water. I start with a fact, a simple fact that by you can start off with percentage of water. ठीक है, fine. और कुछ बताओ. 3% of the water is fresh water. फिर ऐसे है, ठीक है. ये prelims का knowledge use करना हुआ. At least we were one step ahead there कि हाँ हम प्रीलिम्स का नॉलेज यूज कर रहे हैं. और कुछ? हाँ, कौन सी रिपोर्ट है? देयर इज अ रिपोर्ट. व्हाट इज द रिपोर्ट? वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंटल रिपोर्ट. वो आलू है ग्राउंड वाटर की. आईपीसीसी की रिपोर्ट है दैट आर्कटिक वुड गो आइस फ्री बाय 20 इन समर्स बाय 2040. बाय 2040 आर्कटिक आइस फ्री हो जाएगा समर्स में, यानी आर्कटिक में समर्स में आइस नहीं रहेगी. दिस शोज दैट the present world is facing crisis of the fresh water availability because 2.7% of 3% or 2.1% of 3% is ice and glaciers. 3% fresh water है, उसमें से 70% तो ice पे ही है, ice caps और glaciers में. उसमें से बड़ा एक arctic repository है, वो कह रहा है by 2040 वहाँ पे summers पे ice नहीं रहेगी. यानी we are actually witnessing a grave crisis that is going to come in the future. So yes, the world is confronted with the accessibility of the water, and then you can draw a map or you can draw a pie chart कि कहाँ पे fresh water कौन सा है. Ice cap, glaciers and ice cap, ground water, lakes, atmosphere and rivers. वो pie chart बना दिया तो आपने उसको open up dimension कर दिए कि मुझे पता है fresh water क्या है. फिर fresh water की बात करो, talk about questions like melting of glaciers. Example, Himalayan glacier. It is melting. कितने रेट पे हो रहा है, कैसे हो रहा है. सेकेंड, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. You know that agriculture utilizes 90% of the
ग्राउंड वाटर इन इंडिया जैसे है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान बांग्लादेश में भी कुछ इतना ही होगा, 90 नहीं होगा तो 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा। 90% ऑफ रूरल नीड्स तो ग्राउंड वाटर पे इंडिया में है, तो वही बांग्लादेश और वही पाकिस्तान में होगी, शायद 5-10% का फर्क होगा। ओवर एक्सट्रैक्शन, पॉइंट ये सिर्फ इंडिया मत लिख के आना, आजू बाजू के नेशंस की भी हालत सेम ही है, ठीक है, तो कुछ वो लिख के आना, राइट। डेवलप्ड नेशंस की हालत सेम ही है। सो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। एक फैक्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ द ग्राउंड वाटर। वी आर द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर, 25% हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सो वी आर द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर। So over extraction of the groundwater. Pollution of rivers. Talk about many rivers. There is this most polluted river in Indonesia. ठीक है, तो we are polluting the rivers. Talk about lack of storage of rainwater harvesting. Good example is चेरापूंजी, सबसे ज़्यादा बारिश but वहाँ पे हर साल droughts because of the lack of conservation of the rain water. ठीक है, mismanagement of water. अब सिर्फ natural factors नहीं, ह्यूमन फैक्टर्स, हम भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत ज़्यादा, मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड द एसोसिएटेड स्ट्रेसेस। टॉक अबाउट पॉपुलेशन प्रेशर। राइजिंग पॉपुलेशन is already putting pressure on the strained resources, increasing population pressure. बहुत सारी चीजें किताब में नहीं मिलेगी, बट अगर आपको ये आ गया कि मैं इसको कैसे तोड़ूं, कैसे स्प्लिट करूं, व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेश वाटर, दैट मेक्स योर आंसर मल्टी डायमेंशनल। जो फैक्ट्स पढ़ते हो, वट एवर फैक्ट्स दैट यू स्टडी इन द न्यूज पेपर, ट्राई टू फिट इट। So how do you actually start off? You start off, your storyline is like this: fresh water resources, give some diagram, pie chart or table or bar graph or world map. सिर्फ वर्ल्ड मैप नहीं, फिर पाई चार्ट बनाओ। आपको पता है वो प्रीलिम्स वाला जो 7th क्लास का एनसीईआरटी का है, वो 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आना होता है फ्रेश वाटर पे, वो पाई चार्ट बना दिया। फिर उसके बाद आपने जो क्वेश्चन पूछ रहा है, दो चीजें हैं, क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर एंड वाई। तो वाई वाला डायमेंशन कीवर्ड्स में इलैबोरेट करके देन यू हैव टू राइट दी फैक्ट्स एंड देन यू एंड योर स्टोरी। जनरली स्टोरी कैसे एंड करते हो? वे फॉरवर्ड से, सोल्यूशन से, या फ्यूचरिस्टिक दिखा के। हमने इंट्रोडक्शन में फ्यूचरिस्टिक दिखाया कि बाय 2040 नहीं रहेगा, तो वी कैन एंड अप विद दी कंक्लूजन। एक कंक्लूजन जो फ्रेश वाटर रिसोर्स या वाटर रिसोर्स या फ्लड्स या तो ड्राउट्स पे आएगा, दैट इज योर मॉडल। देयर इज अ मॉडल बाय वन कंट्री। कोई सिटी है जो ऐसे अच्छी सिटी बना रहे हैं, वो जो अच्छी सिटी बनी है जो फ्रेश वाटर को कंजर्व करेगी, जो रेन वाटर को कंजर्व करेगी। सुना है आप सबने? If I'll say, you will say yes. स्पॉन्ज सिटी ऑफ चाइना, चाइना की स्पॉन्ज सिटी। सुना है? नहीं सुना है? Have heard? Not? How many of you have not heard? स्पॉन्ज सिटी ऑफ चाइना आपने सुना है? What is China actually trying to do is, China is trying to create green lands, forests, wetlands, the pavement that on which you walk. They want to create permeable pavements. That means if any rain that comes, ठीक है, राजेंद्र नगर तो बाढ़ आ जाती है, थोड़ी सी भी बारिश आती है तो, right? So if any rains that come, that will seep in. It will seep in the ground. It is like a master stroke. You absorb the rainwater, you increase the groundwater table. As you increase the groundwater table, the problem of droughts are reduced. And because in case there is a heavy rainfall, if you have wetlands, if you have greenlands, if you have forests, the problem of flooding will also be solved. So problem of floods and droughts can be solved by putting green infrastructure, by putting wetlands, by putting forest. इसलिए ये जो wetlands होते हैं, जो trees होते हैं, ये sponges की तरह काम करते हैं. They are like a sponge, absorbs the water. They also absorbs the water, and therefore, what is the city called as sponge city of China? Last to last year, when there was lot of flooding in Bangalore, La Nina tha. One recommendation that was consistently there in the newspaper is Bangalore should become a sponge city. Bangalore should become a sponge city. So Bangalore is famous for its lake. Lakes can also absorb the water, but then industrialization के कारण we have destroyed the lakes. We have encroached on wetland. मुंबई देखो wetland पे बने हैं, wetland को encroach करके बना है, forest को काट के बना है. Major cities जिस kind of हम development करते हैं, right, the kind of development that we do, we are not very water sensitive.
चाइना इज वेरी वाटर सेंसिटिव, वो अपने एग्रीकल्चर से भी पानी निकाल लेंगे, क्रॉप से, उसको बोलते हैं वर्चुअल वाटर। सोयाबीन, ड्राई सोयाबीन मिलती है, बिकॉज दे टेक आउट द वाटर फ्रॉम दैट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। क्रॉप्स हैव लॉट ऑफ वाटर, राइट, वेट भी है, लाइक राइस हैज वाटर, व्हीट हैज वाटर, दे विल टेक आउट दैट वाटर एंड दे विल देन ट्रेड, दिस इज कॉल्ड इज वर्चुअल वाटर। सो वेरी 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 सेंसिटिव टू वाटर, ये इकोनॉमिक सर्वे में आया भी था एक बार, वर्चुअल वाटर ट्रेड। इंडिया इज द नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्चुअल वाटर, क्योंकि हम हमारे पानी को निकाल नहीं पाते, बट चाइना टेक्स आउट एंड चाइना इज द नेट इम्पोर्टर ऑफ द वर्चुअल वाटर, क्योंकि उनको जो इम्पोर्ट करते हैं उसमें वर्चुअल वाटर होता है। सो दे आर वेरी वाटर सेंसिटिव देयर, राइट। तो इधर आप सोल्यूशन में लिख सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट इन द सोल्यूशन, यस अर्बनाइजेशन, अभी फ्लड्स में भी बह गई, यस सुना था, विजय जोशी, यस, okay, fine. So yes, you'll have to talk about solutions like sponsity, talk about climate change related solutions, engineering solutions, talk about forestations and other things. Fresh water का problem हो रहा है तो हमको conserve तो करना है पानी, तो solutions बताएंगे, clear? है तो फ्रेश वाटर ना, है तो फ्रेश वाटर ना, दिखा रहा है कि क्राइसिस होने वाली है फ्यूचर में। आप फ्यूचर यानी क्या बोल रहे हो, 100 साल बाद, 500 साल बाद, 300 साल बाद, इतना बड़ा रिपोजिटरी है फ्रेश वाटर का, आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा समर में। बेसिकली इंटेंसिटी ये समझो कि समर में आइस नहीं बचेगी, विंटर में फिर से आइस आएगी, वरना समर और विंटर में दोनों में आइस होती थी, बट अब समर में आइस नहीं बच रही, तो फ्रेश वाटर कम हुआ ना, हमारा प्रॉब्लम चल रहा है ना फ्रेश वाटर का। पॉइंट है कि हमको क्राइसिस दिखाना है, टू शो दी क्राइसिस देयर। ओके, हाउ आर फ्योर्ड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फ्योर्ड्स फॉर्म, व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पिक्चरिस्क एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्योर्ड्स कैसे बनते हैं, नोट 5 खोल दिया क्या, 3, परफेक्ट। Okay, so basically how are fjords formed, and why do they constitute some of the world's most picturesque area of the world, fjords formation and some of the most picturesque areas of the world. So what are fjords? Basically fjords are nothing but submerged glacial valleys. So here you have, whenever you might have heard that we have valleys, there can be a hanging valley, there can be a U-shaped valley. Okay, suppose this valley, I'll just keep it like this, and I can keep it on a coast, and in the coast, यहाँ पे पानी भर जाए, there is water. So what do you have? You have a coast that is called as submerged glaciated coast. इसको example of India से relate करें, India में western coast is submerged coast, the river valley has submerged, the rivers do not form deltas, the river form estuaries, होता है submerged river coast. यहाँ पे रिवर वाला कोस्ट सबमर्ज नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्लेशिएटेड कोस्ट हैज सबमर्ज्ड, एंड देन व्हाट यू हैव दी फ्योर्ड्स, ठीक है। तो ग्लेशिएटेड कोस्ट हैव टू बी सबमर्ज्ड. सो वेयर डू यू फाइंड फ्योर्ड्स? बेसिकली यू फाइंड फ्योर्ड्स along the high latitudes. High latitudes of, if you look at the world, you have around the Greenland, और rather अलास्का से स्टार्ट करते हैं, कनाडा में है, ग्रीनलैंड में है, नॉर्वे में है, स्कैंडिनेविया में है, फिनलैंड में है, ठीक है। तो ये पूरा बेल्ट है जहाँ पे यू विल हैव द ग्लेशिएटेड कोस्ट, द ग्लेशिएटेड सबमर्ज्ड कोस्ट.
and this is only because something is submerging, right? The coast will not be straight. The coast is not straight. Submerged coast कभी भी straight नहीं होता है because erosion अलग होता है, wind अलग erode करती है, rivers अलग erode करती हैं, glacier अलग तरीके से erode करते हैं, secular erosion नहीं होता है. So a fjord coast does not actually look straight. A fjord coast is an indented coast. If you look at in your map, in the world map atlas, आपको दिखेगा fjord जो नॉर्वे वाला कोस्ट है कभी स्ट्रेट नहीं है, बहुत सारे इंडेंटेशन होते हैं, बहुत सारे कर्व होते हैं. That is because it is a submerged coast. It's a submerged glaciated valley. So how are fjords formed? How are fjords formed? Right. How are fjords formed? And why do they constitute as some of the world's most picturesque area of the world? ठीक है. Actually ये जो question था, ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी से ऐसा क्वेश्चन आएगा. जनरली लैंडस्केप्स या लैंडफॉर्म्स पूछता नहीं, दे डोंट आस्क लैंडफॉर्म्स. आई हैव टोल्ड दिस ऑन द क्लास ऑल्सो कि कभी नहीं पूछा है आज तक, अब इस बार ऐसे पूछ लिया, ठीक है, तो वो छेड़ने के लिए पूछा है. तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दोज आर राइटिंग मेन सेड दैट व्हाई आर दे पिक्चरिस्क, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. हमें सुंदर लगते हैं तो लगते हैं, ठीक है, बट डोंट राइट लाइक दैट, ठीक है. दे आर one of the most picturesque landscape because see you have whole of the cliffs, पूरा का पूरा cliff है, यहाँ पे आपके mountainous region ही है, तो आपके coast के पास which is just the sea level you have a towering cliff. So these towering cliffs looks very beautiful, reflection आते हैं. Even if you look at Kashmir में Dal Lake with this reflection of the lake. So if you click photo on the lake you will know that आपको photo से समझ नहीं आएगा मैं sky का picture click कर रही हूँ कि lake का picture click कर रही हूँ, तो कितना beautiful वो दिखता है. It's very beautiful to see that just near the sea you have a cliff, you have towering cliffs there. So here गोवा क्यों जाते हैं, बीच भी दिखता है, सामने पहाड़ भी दिखता है, तो लाइक यू फील हैप्पी राइट कि हाँ सामने कितना डाइवर्स लैंडस्केप. यू हैव बीच, यू हैव सैंड, यू हैव towering cliff, similar features. So you have ice, you have coast, and you have just the towering cliff nearby. So that's one reason that it's very picturesque. Second is it is also picturesque in the sense because of the glaciers carving these valleys. Okay, so you have diverse waterfalls here. You have lot of waterfalls. Glacial ice जब melt होती है तो waterfalls बनते हैं. So you have good waterfalls here. This is also important because there are many tourism activities, recreation activities, adventure sports जो होते हैं, जो you have this diving and other things. Basically, that further adds to the picturesque one. So why are they so picturesque? Because there are towering cliffs, there is waterfalls, there's diverse wildlife. You have sea, you have high altitude cliffs, you have ice. तो wildlife भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे diverse हो जाता है, ठीक है. और disconnected होते हैं काफ़ी mainland से, coast होता है, बीच में cliff है, so very disconnected. So here on the coast, people have their own culture, small villages, homesteads, so very good for recreation. So that is why they are so picturesque, right? Another question which was quite interesting, and I believe ये पता होना चाहिए, क्लास में किया था कि क्यों कैसे आपका अरेबियन सी ब्रांच आता है, कैसे आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच. If you look at the question is why is southwestern monsoon called as Purvaiya in Bhojpur region. ठीक है, तो भोजपुर पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए भोजपुर सॉन्ग से, भोजपुरी सॉन्ग से, ठीक है, कि हिंदी वाले ही सॉन्ग्स हैं. तो साउथ में तो कहीं नहीं है, ठीक है, ना ही कश्मीर के पास है, कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के पास नहीं है, इतना नॉर्थ में नहीं है, इतना साउथ में नहीं है, तो बेल्ट पे कहीं पे भोजपुरी सॉन्ग्स थे, हिंदी बेस्ड सॉन्ग्स, राइट. सो वेयर द साउथ वेस्ट मानसून विल इज कॉल्ड एज पूर्वैया ईस्टर्ली इन द भोजपुर रीजन. तो व्हाई इज दिस हैपनिंग, किस विंड की बात कर रहा है, किस ब्रांच की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट the Bay of Bengal branch. So here we know that we have what? You have an Arabian Sea branch, southwest monsoon winds. You also have southwest monsoon winds like this, but then they get deflected by Arkan-Yoma, Pegu-Yoma, and they turn like this, and they also come with full-fledged northeast region में भी जाता है. Because it is turning, it is being called as what? Purvaiya. ठीक है, तो पूर्वैया इसको इसलिए कहते हैं. So you'll have to talk about, you'll have to describe about the Bay of Bengal branch. So why are they called as Purvaiya? How can you start off? You can start off introduction by directly mentioning about monsoon winds. That monsoon winds
though they are mostly southwest in nature, but then their local branches are governed by local orography. Orographic होते हैं और उनके local directions आपके mountainous region से govern होते हैं, तो यहाँ पे वो turn हो जाते हैं. Then you draw a diagram, show that they turn here, the Bay of Bengal branch turns here. Now, the second part was something that was tricky. अब क्या हो रहा है papers में? There is overlapping of the subjects, right? Like first question अगर आप देखोगे, तो first question discuss the role of geographical factors towards the development of ancient India. Ancient India में geography ने कैसे help की? वे geography का question डालूं कि history का question डालूं, right? It is actually history question because history की तरह से सोचोगे तो जल्दी याद आएगा. Indus Valley Civilization में कैसे geography ने role play किया, मगध में कैसे हुआ, Indo-Christians में क्या हुआ, second urbanization में कैसे किया, तो geography जल्दी याद आएगी. अगर geography सोचोगे तो tough लगेगा question. ये history का question. But एक चीज समझो, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इंटरफेस है. ये वाला क्वेश्चन तो बहुत लोगों को ज्योग्राफी का ही लगा. They have thought this is a geography question. Socio effect of introduction of railway in different countries of the world. Countries, different countries of the world. Railways की बात करते हैं. हम इंडिया के बारे में ही पढ़ते हैं कि कैसे रेलवे ने पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया, कल्चरल इंटीग्रेशन किया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया और कहीं कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ भी थी. पॉवर्टी, बिकॉज इंडिया वाज रॉ मटेरियल्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटिश. बट यहाँ पे फिर ज्योग्राफी भी आती. व्हाट इज द पॉइंट दैट आई एम ड्राइविंग इज, द पॉइंट इज दे हैव वेरी स्मार्टली डन पुट कल्चर हियर. तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पार्टली, और पार्टली आ जाता है सोसाइटी वाला एस्पेक्ट. बिकॉज हाउ डज द डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम, ओके, द विंड सिस्टम दैट इज डायरेक्शनल, दे इन्फ्लुएंस द कल्चरल ईथर्स ऑफ द रीजन. वो कैसे कल्चरल ईथर्स को शेप करता है. यानी मॉनसून विंड्स का ही तो पूछ रहे हो ना कि मॉनसून विंड्स कल्चर को कैसे शेप करता है. मॉनसून विंड चाहे अब वो पूर्वैया हो गई है, अब वही पूछ रहे हो कि वो पूर्वैया कैसे कल्चरल रीजन के एथोस को या कल्चरल इथोस को शेप करता है. तो कैसे करता है मॉनसून. यू विल सी दैट मेनी ऑफ द फेस्टिवल्स इन इंडिया आर कोरिलेटेड विद व्हाट, व्हेन द हार्वेस्ट इज गिवन. सो हियर छठ पूजा, ठीक है, छठ पूजा इज बिकॉज छठ पूजा इज यू ऑफर द ऑफरिंग्स हार्वेस्ट टू द गॉड, सन गॉड. तो वो भी है वैसा ही कल्चर है कि पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो होते हैं दे आर गवर्न्ड बाय व्हाट, दे आर गवर्न्ड बाय द मॉनसूनल विंड. सो मॉनसून गवर्निंग द फेस्टिवल्स. मॉनसून ऑल्सो इज बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन सॉन्ग्स. जो लोकल संगीत होते हैं, लोकल सॉन्ग्स होते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है. अब इस रीजन में ना आपको शायद स्पेसिफिक्स नहीं पता होंगे एग्जाम में, बट एटलीस्ट जो जनरलिस्टिक का आइडिया वो तो लिख के आओ. अगर इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन, 5 and 5, first 5 is gone, second 5 में at least you will get 2, 3, 2.5, even if you like don't write specific things, at least get something. first 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, second में से 2, 2.5 मिलेंगे, तब भी 5 number is good to go. So that ways you'll have to think. So how does it influence culture? You talk about post harvest festivals, you talk about food habits. We've already seen the eating of rice, ठीक है, जो rice और wheat culture होता है, that is governed because of the monsoon winds, कि कितना intensity से बारिश आ रहे. There is dance, ठीक है, if you want some name, the name of the dance is झिझक, झिझक dance. भोजपुरी dance form है झिझक. Basically झिझक is, it has a very rhythmic movement. The movement is rhythmic so as to resemble the rhythmic movement of the dance or raindrops. Raindrops का कैसे rhythmic movement होता है, वैसे ही वहाँ पे एक डांस है झिझक जो बहुत ही rhythmic movement से people keep on dancing. So भोजपुरी dance form like झिझक, they are known for rhythmic movements resembling rain drops. You have music like Kajri music that is sung during the monsoon season. Kajri music है जो कि monsoon season में लोग गाते, right? And then you have Sawan Sangeet. In India you have, at many places you have this Sawan Sangeet. Sawan Geet जो होते हैं, that is also because of the monsoon. और क्या govern होता है? Cropping pattern. जो कौन से crop grow करोगे. जब पूर्वैया चलती है तब अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जब वेस्टर्ली चलती है तब अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं. जब पूर्वैया चलती है तब आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, ठीक है, जैसे राइस. जब नॉर्थ वेस्ट वाला चलता है, जब नॉर्थ वेस्ट पे हाई प्रेशर आ जाएगा तो वेस्ट चलती है, ठीक है, तब आप ड्राई क्रॉप्स ग्रो करते हैं जैसे कि वीट और पल्सेस. तो दे ऑल्सो अफेक्ट दी क्रॉपिंग पैटर्न. तो क्या देखा, क्रॉपिंग पैटर्न, डांस, म्यूजिक्स, द ईटिंग हैबिट,
that is governed by this one, right? Okay, समझ आया? This was about your question number 7, right? Then what do you have? We have question number 14. Discuss the question number 14, 8, 9, 10, 11, 12. These are your society and history. Then you have 13. Comment on the resource potential of the long coastline of India and highlight the status of hazard preparedness in this areas. So आप status बता रहे हो, discuss the comment on the resource potential, right? You are commenting on the resource potential on the long coastline of India. और keyword क्या है? Comment, ठीक है? So you have to tell me that do we have good enough resources on the long coastline of India? One, comment पूछ रहा है, describe नहीं कर रहे कि मुझे बता दो कि है कि नहीं, कमेंट करो. एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दिस एरिया. सो इस एरिया में कोस्टलाइन में काफी सारे नेचुरल हजार्ड्स आते हैं, उसके हिसाब से प्रिपेयर्डनेस बताओ. नेचुरल हजार्ड्स के हिसाब से आप प्रिपेयर्डनेस बताएं, दैट आर वी रियली प्रिपेयर्ड टू टैकल दीज हजार्ड्स. अब ऐसे क्वेश्चंस में काम आते हैं फैक्ट्स. हियर इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस फैक्ट्स आर important. So how will you start? You can simply start off with that India has 7,516 kilometer of coastline, 6,100 is in the mainland and rest of them is in the Andaman and Nicobar. So we have this coastline and these coastline have lot of resources. जब भी आप resource देखो, what comes to your mind? Whenever you hear the word resource, what comes to your mind? When you hear the word resources, what comes to your mind? Oil and gas or metallic minerals or वही metallic minerals, polymetallic nodules. Or resource is not simply minerals, oil and gas, rare earths. सिर्फ ये नहीं होता है. Resource is also about the biotic resource. जब भी resource is something what that has utility. आपको सिर्फ मिनरल्स दिखते हैं, बट रिसोर्स इज ऑल्सो अबाउट दी बायोटिक रिसोर्स. रिसोर्स इज ऑल्सो अबाउट लैंड रिसोर्स. रिसोर्स इज ऑल्सो अबाउट वाटर रिसोर्स. रिसोर्स इज ऑल्सो अबाउट एनर्जी रिसोर्स. ये कोस्टलाइन है, क्या टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, ओटेक है, ये भी आपके डायमेंशंस आएंगे. ठीक है, दैट वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्स पोटेंशियल लाइकवाइज. ठीक है, फ्रेश वाटर की बात करो ना बच्चे, वाटर की बात करो, तो फिशरीज की बात ही नहीं करो. इसमें बायोटिक में डालो. बायोटिक में व्हाट विल यू पुट? यू विल पुट फिशरीज. बायोटिक में कैन आई पुट नेचुरल वेजिटेशन? द मैनग्रोव्स. मेनी ऑफ द coastlines also have what? You also have along Andaman Nicobar and this, you also have evergreen trees, evergreen forest. कुछ लोकल नाम है जैसे गुर्जन ट्री, पदोक ट्री, ये मैचस्टिक बनाने में काम आती है. ठीक है, तो कोस्ट लाइन पे काफी रिसोर्स पोटेंशियल है, बट हमारा रिसोर्स पोटेंशियल सिर्फ 2 पे रह जाता है, ऑयल एंड गैस, मेटालिक मिनरल. और अगर आप एक स्टेप आगे गए, क्योंकि आपने प्रीलिम्स पढ़ा है, तो वो आपका मोनाजाइट सैंड्स एंड वो आएगा, वो प्रीलिम्स का नॉलेज. हाँ, केरला वाला मोनाजाइट सैंड. हाँ, यू कैन कवर अप. हाँ, एनीवेयर. पॉइंट इज डायग्राम में डालो, मेन बॉडी में डालो, या कहीं और लिखो, बट डायमेंशंस को ओपन अप करना स्टार्ट करो, बिकॉज दैट विल मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल. सो व्हेन आई से comment on the resource potential, India has 7,516 kilometer of coastline. We have good EEZ. We have lot of resource potential on this. ठीक है, एंड इसमें जब आप मैप बनाते हो तब आप लोकल एग्जाम्पल्स यूज करो, लोकल नाम यूज करो. जैसे मैंने गुर्जन ट्री और पदोक ट्री का बोला, दैट्स देयर इन Andaman Nicobar, that is used for this matchstick making. When I talk about mangroves, write some names. Write about भीतरकनिका mangroves. Talk about Sundarban. Talk about वो आंध्र प्रदेश के पे है जो है what कोवाड़ा. You have a whole belt of near the आंध्र प्रदेश. गुजरात के mangroves. The state of forest report says कि गुजरात के mangroves बड़े हैं. So talk about those dimensions. ठीक है, fisheries, write some local names. Write some local names. Fresh water fisheries, marine fisheries. तो
ये जो डायमेंशंस है ना, ये डेवलप करना है। पहले तो ओपन अप करना सीखो डायमेंशंस को, और उसके बाद आपको कंटेंट किस में पुट करना है, फैक्ट्स में और फिगर्स में और एग्जाम्पल्स में। फैक्ट्स, फिगर्स एंड एग्जाम्पल्स। मेनी टाइम राइट वी सी अ न्यूज़पेपर रीडिंग एंड देन वी से कि ये क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे ये झाड़ मिल गया या वो मिल गया, बट कहीं ना कहीं इफ इट इज इन योर माइंड यू विल टेंड टू राइट दोज इन दी आंसर्स। ठीक है, तो बी वेरी स्मार्ट देयर। You also can also write when you say resource. I actually forgot one resource is your tourism. Tourism potential भी तो resource ही है। Resource यानी क्या, जिसकी कोई utility है। So tourism potential is also a resource. ठीक है। Fish, हाँ, olive ridley turtles, olive वो aribadas and olive ridley turtles. ठीक है, तो you can talk about that. हाँ, yes, कोरल रीव्स भी है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, यू हैव एट व्हाट, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ओपन अप योर आंसर, ठीक है, दैट विल गिव योर आंसर मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। ये फर्स्ट डायमेंशन था। हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन द एरिया। हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस। वो आपसे ये पूछ नहीं रहा है कि मुझे बस नेचुरल हजार्ड बताओ कौन से हैं, मुझे बताओ कि जो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं। Are we prepared for the natural hazards or not? So firstly you'll have to think what are the hazards on the coastline. Then you'll have to think are we really prepared for those hazards, because it says highlight the status of natural hazard preparedness in this area. ऐसे में क्या होता है ना, hazards को आप दिखा दो डायग्राम में, और status of preparedness are we prepared or not, that you'll have to write in the body. So what are the hazards that the coastline has? Cyclone, सुनामी और फ्लड्स और स्टॉर्म सर्जेस एंड फ्लड्स। साइक्लोन के साथ ही ऐड कर लोगे, स्टॉर्म सर्ज एंड फ्लड्स। और व्हाट हजार्ड मोर, बताओ और हजार्ड। ठीक, हाँ, फाइन, ओके, डन। No, that's not an hazard. That's destruction. Come on. Yes. Sea level rise. Rising sea level and coastal erosion and submergence. Coastal erosion, submergence and sea level rise. So coastal erosion, sea level rise. Facts है ना, मुंबई, आधा मुंबई submerge हो जाएगा by next 2-3 decades. Half of the Mumbai would be submerged. Pollution, you said pollution, so also pollution is one of them. Pollution, and we have what, sea level. अब मुझे status बताना है कि how far am I prepared for this, how far am I prepared for cyclone, how far am I prepared for tsunami, how far am I prepared for handling the pollution, what is my preparedness with respect to sea level rise and coastal erosion and submergence. ठीक है, अब सोचना है कि कितना प्रिपेयर। साइक्लोन, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर साइक्लोन बिकॉज यू नो द सैटेलाइट monitoring and the prediction and the path is fairly well done, ठीक है, because of the satellite mapping. 0 casualties होती है nearly, ठीक है। ओडिशा मॉडल भी एक है, वो भी we are very well prepared for this. When I talk about tsunamis also we are well prepared because we have ITEWS, we have this the regional tsunami early warning system, ठीक है। तो इंडिया ने पूरे रीजन के लिए, तो आपको पहले से पता होता है सुनामी, that is also you are better prepared so far, but we are not prepared for this, we are not prepared for sea level rise, coastal erosion and submergence. इसके लिए हम prepared नहीं, ना ही इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में, ना ही हम बाकी चीज़ें। सुनामी के लिए मैनग्रूव्स वगैरह के लिए हमने चीज़ें करके रखी, but we are not actually prepared for this. Yes, in the way forward you can write about the solutions, talk about coastal regulations and the other things, ठीक है। Yeah. Okay, moving on to the next question. The next question is about what? The next question is discuss the factors responsible for the diversity of the natural vegetation in India. इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है, हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी क्यों है उसके मुझे फैक्टर बताना, ठीक है।
तो में से मेन बॉडी में पूछ रहा है, एंड लेट अस डिस्कस द अदर क्वेश्चन आल्सो. Assess the significance of wildlife sanctuary in the rainforest region of India. You have to assess the significance of the wildlife sanctuaries in the rainforest in India. How am I thinking in the question? I am thinking कि मुझसे क्वेश्चन में बॉडी में पूछ रहा है कि क्या फैक्टर्स हैं फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया. तो मैं इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ क्या डाइवर्सिटी है. अगर मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया दैट यू नो वी हैव lot of huge diversity, we have tropical evergreen forest, coniferous forest, temperate evergreen forest, grasslands, tropical grasslands, temperate grasslands, shola forest, mangroves. तो मेरी डाइवर्सिटी इस्टेब्लिश हो गई. या तो मैंने पूरी डाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन में ही दिखा दी कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है और उसके बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. डायग्राम में मैंने फैक्टर्स दिखा दी या फैक्टर्स के नाम लिख लिए और फिर मैं बॉडी में बता रही हूँ कि ये कैसे फैक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ. आई एम डिस्कसिंग इन वन लाइन. ठीक है, दिस इज व्हाट 15 mark. I am discussing those factors in one line. Then it says assess the significance of wildlife sanctuaries in the rainforest region of India. तो पहले तो मेरे दिमाग में आएगा रेन फॉरेस्ट रीजन कौन से, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है, और उसके बाद मुझे असेस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मुझे ये बताना है असेस द सिग्निफिकेंस, क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर दी सिग्निफिकेंट इन द रेन फॉरेस्ट रीजन. स्टोरी समझ आ रही है या सोचना कैसे समझ आ रहा है? डाइवर्सिटी क्या है, डायग्राम क्या बनेगा, फैक्टर्स क्या हैं डाइवर्सिटी के लिए, रेन फॉरेस्ट कौन सी है, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है, और उसके अंदर मुझे असेस करना है इंपॉर्टेंस. एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट विल हेल्प यू इन स्ट्रक्चरिंग द आंसर. सो यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ दैट यस इंडिया हैज लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट. कौन से फॉरेस्ट है हमारे यहाँ पे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस. वी हैव ट्रॉपिकल grasslands, we have temperate grasslands, we have montane forest जो शोला फॉरेस्ट है, we have mangroves forest. ये हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है. Now what are the factors responsible for diverse vegetation? What are the factors responsible for diverse vegetation? Tell me. अब क्लाइमेट बोलोगे तो खत्म हो गया एक पॉइंट में. क्लाइमेट को तोड़ो. What does the word climate mean? टेम्परेचर. जहां पे हाई टेम्परेचर है वहां पे क्या होगा? ट्रॉपिकल. जहां पे कम टेम्परेचर वहां पे होगा टेम्परेट. रेनफॉल, द सीजनैलिटी ऑफ रेनफॉल. तमिलनाडु में यू हैव ड्राई सेमी एवरग्रीन. क्या बोला मैंने? ड्राई सेमी एवरग्रीन. अब ड्राई भी बोल रहे हो, एवरग्रीन भी बोल रहे हो. हाँ, क्योंकि तमिलनाडु में विंटर्स में बारिश आती है, तो दे आर नॉट डेसिडुअस. They are dry semi evergreen. They are not evergreen, but they are dry semi evergreen. तो हमारी एक और यूनिक टाइप है रेनफॉल की सीजनैलिटी पे. एक तो रेनफॉल के अमाउंट पे, जहां ज्यादा बारिश होगी वहां एवरग्रीन, जहां कम होगी वहां डेसिडुअस, और एक सीजनैलिटी पे भी, दैट व्हेन आर यू रिसीविंग रेनफॉल. सो सीजनैलिटी ऑफ द रेनफॉल. एनीथिंग एल्स? ऑल्टीट्यूड. टेम्परेचर में आप फिर लैटिट्यूड की भी बात कर सकते हो, टेम्परेचर में आप ऑल्टीट्यूड की भी बात कर सकते हो. इस ऑल्टीट्यूड में यू कैन ऑल्सो शो जोनेशन मैप ऑफ इंडिया. राइट, यू हैव डन हिमालयस, वी हैव सीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वी हैव सीन ट्रॉपिकल डेसिडुअस, देन वी सॉ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, देन वी सॉ द आइस कैप एंड देन टुंड्रा. तो ऑल्टीट्यूड जोनेशन का मैप भी आप बना सकते हो. सो हियर व्हाट यू हैव? टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड. रेनफॉल. एनीथिंग एल्स? लिख लिया ना लैटिट्यूड. Latitude is tropical location. Soil. Okay, soil also play an important role. Fine, yes, soils play an important role, but soil से ज़्यादा कुछ और important है. Environment में you might have studied. Sorry? Distance from the sea. ठीक है, वही होगा ना, बारिश ही होगी. बात तो वही कर रहे, टेम्परेचर, बारिश. Landscape, no, something else. Have you studied that India has lot of biodiversity in terms of vegetation because India is at the confluence of many realms, big Indo-Malayan realm, Palearctic realm, Arctic realm. हम लोग basically if I talk about world you have in the Eurasian region you have Palearctic type of vegetation. In the tropical region you have Paleotropical type of vegetation. Africa में, ठीक है, अमेरिका पे नियोट्रॉपिकल है, पैलियोट्रॉपिकल है. तो इंडिया जैसे कॉन्फ्लुएंस पे है, हिमालयस वाला रीजन भी है तो पैलियार्कटिक वाला भी आता है,
मलेशिया वाला रीजन है तो इंडोमलेन रेम भी आता है। तो इंडिया इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी बिगर रीजन्स। इट्स लाइक इफ यू वुड हैव हर्ड द टर्म व्हाट डू वी से इकोटोन, इंडिया इज एट अ इकोटोन ऑफ वेरीड टाइप ऑफ वेजिटेशन। यूरेशिया में एकदम अलग वेजिटेशन है, साउथ ईस्ट एशिया में अलग वेजिटेशन है, और इंडिया में दोनों आ जाते हैं, दोनों का ओवरलिप। तो इंडिया इज एट ए इकोटोन जोन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ दी कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। So that is also one of them. We also have huge biodiversity base. हमारा biodiversity base बहुत बड़ा है। हमारे पास क्यों इतना है? Because इंडिया में काफी बड़ा biodiversity base and it is like a ecotone. ठीक है, तो अलग अलग वेरीड दूसरे दूसरे रीजन की अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस हैं। यूरेशिया वेरी कोल्ड, साउथ ईस्ट एशिया वेरी वेट, इंडिया उसके इकोटोन में आ जाता है। तो हमारा बायोडाइवर्सिटी बेस काफी बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज दिस, assess the significance of wildlife sanctuary in the rainforest regions of India. पहले तो ये सोचो, मुझे बताना है assess the significance of wildlife sanctuary, यानी मुझे wildlife sanctuary कौन सी है पता होनी चाहिए, रेन फॉरेस्ट में कौन सी पता होनी चाहिए, और उसके बाद उनका इंपॉर्टेंस असेस करना। तो पहले ये सोचो, वेयर इज द रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? वेयर डू वी हैव रेन फॉरेस्ट? नॉर्थ ईस्टर्न साइड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, and the western side of western Ghat, but not the entire side of western Ghat. Western में south western part, basically जो नीलगिरी के पास, वायनाड के पास, मालाबार के पास है, वहां पे आपका मेनली एवरग्रीन होता है, ठीक है। वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट एवरग्रीन होता है, बट रेन फॉरेस्ट जो होता है वो इधर होता है। तो रेन फॉरेस्ट कहाँ पे? यू हैव अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, एंड यू हैव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है? व्हाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डू वी हैव इन दीज रीजन्स? इराविकुलम नेशनल का, नीलगिरी, फाइन, नीलगिरी से थोड़ा नीचे आता है वैसे, वायनाड है, वायनाड इज देयर, नीलगिरी इज देयर, हाँ, द नॉर्थ ईस्टर्न वन इज देयर, टुवर्ड्स अंडमान एंड निकोबार यू हैव दिस गलथिया, यू हैव मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो आपका इस तरफ आता है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क्स हैं, जो अंडमान निकोबार वाले हैं, right? In case you have Oxford Atlas, on page number 37 of Oxford Atlas, there are whole national parks given, and उस पे rivers भी plotted है. So rivers as well as national parks are plotted on the same river, same map. Generally अलग-अलग maps पे होता है, but Oxford का page number 37, the new student Oxford, they have it. तो वहाँ पे you will at least know the places. So what all do we have there? We have Wayanad, we have Periyar, we have Eraviculam, we have Hornbill, we have Nicobar Biosphere Reserve, you have Marine Biosphere Reserve, you have Mount Harriet Biosphere Reserve, Saddle Peak Biosphere Reserve, गैलेथिया, ठीक है। तो ये सब आपकी बायोस्फीयर रिजर्व है, इनके अंदर कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व है, इनमें कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब आपको क्या करना है, पहले आपने रेन फॉरेस्ट सोचा, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोची, ये सब प्रोसेसिंग करनी है 10 मिनट में वहाँ पे, ठीक है, एंड उसके बाद उसका असेस करना है इंपॉर्टेंस। Now what is the importance? Assess the importance. Assess the importance. Importance, significance of the wildlife sanctuary. It is trying to do what? In situ conservation. So it is trying to go for in situ conservation. So it is trying not to trying to break the linkages, food web, food chain की linkages को नहीं तोड़ रहा है, तो ये important हो जाता है, because ये पूरे ecosystem को बचा रहा है, right? It is conserving the whole ecosystem. So in situ conservation are one of the best methods of conservation. So it is important. Second, it creates awareness among people about the nature of the species. जो species है उनका nature, उनका conservation, ठीक है, उनकी requirements के बारे में wildlife sanctuaries जो हैं वो awareness create करती है, पूरी wildlife species को वो conserve करने के लिए awareness create करती है among the villagers, among the communities. So it helps in conservation of those. It also tries to retain the, reduce the pressure. तो आपका जो tourism है वो eco tourism की तरह protect करने की बात करते हैं. It actually allows for restraint based of tourism. It also prevents, क्योंकि boundaries बनाती है, it also prevents animal man conflict.
उसको प्रिवेंट करती है। तो इम्पोर्टेंस तो है, बट जब भी कोई चीज को असेस करने के लिए बोलता है तो उसके दोनों साइड होते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट, हाउएवर देयर आर सर्टेन limitations. What are the limitations of wildlife sanctuary? Whenever you have to conserve certain places, you can either declare it as national park, you can either declare it as wildlife sanctuary, you can either declare it as biosphere reserve. पर अलग अलग level of governments declare करती है. National park is generally declared by what? By the central government. Wildlife sanctuaries are generally declared by what? The state government. So wildlife sanctuary में degree of protection कम होता है, तो ये इसका limitation है. Assess the importance पूछ रहा है, so degree of protection is less. So in the wildlife sanctuary there is less degree of protection. The boundaries are not clearly demarcated. There is illegal smuggling that is going on, and there is also, because of lack of awareness among the people, this is seen as encroaching. There is lot of issues. ठीक है, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. यस, असेस द सिग्निफिकेंस बोल रहा है ना, मेंशन द सिग्निफिकेंस नहीं कह रहा है. इट इज सेइंग असेस द सिग्निफिकेंस. असेस करने के लिए कह रहा है. डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस, मेंशन द सिग्निफिकेंस होता तो बोल देते. अच्छा, सिग्निफिकेंस अलग होता है, इम्पैक्ट अलग होता है. मेंशन द इम्पैक्ट होता तो फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट लिखते हो. इम्पैक्ट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, इम्पैक्ट का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता. So you will have to read the question carefully. It is saying assess the significance. So importance को assess करो, क्या ये important है भी और उसकी limitations क्या है. Are you getting it? To discuss the limitations of that also. Right? This was the question number, this one. Okay. Then you have, this is discarded by sir, history sir. Net importer India has emerged as an exporter. ठीक, अच्छा ठीक, fine. So here, let me first start off with this one. Why did human development fail to keep pace with economic development in India? We have lot of economic development, but still we do not have human development. Why is this happening? Why is this taking place? That we have not been able to keep the pace. ठीक है, फाइन. There's lack of adequate focus to the. तो पहले तो इंडिया, पहले how do you start? India is one of the top 3, top 5 in the economic development. हमारे economic development में, economic development indexes में इंडिया top 5 पे आता है. ठीक है, बट आप उसी को अगर देखोगे तो इंडिया की स्किल्स लोवेस्ट पे है. इंडिया की लिटरेसी skills, we don't have much of the skill population, we do not have functional literacy. If I talk about educational level, India is rising. The literacy level has increased, but that is not functional literacy. हमारी जो यहाँ पे literacy की definition है वो क्या है? If you can read or write or sign, if you are above 7 years of age, if you can read and sign, आप sign कर सकते हो या read कर सकते हो कोई भी local language में, तो आप literate हो. ठीक है, that is the definition of literacy that we have. So it's saying why the human तो हमारा human development इतना नहीं हुआ है जितना हमारा economic development हुआ. And why this has taken place? Less percent of GDP is spent on education. How much do we spend on education? Anybody? 2 to 3%. इतना ही. 1.5 health पे होता है, 3% education पे होता है. तो हमारा human development नहीं हुआ. So this less percentage of GDP is shared. और बताओ. Less percentage of GDP is shared. Then okay, human development, हाँ correct. Human development is also a function of awareness of population. ठीक है, तो हम कितना aware हैं? Sensitivity towards education and skills. There's less focus, less sensitivity towards education and skill. कितना पढ़ा रहे हैं but ऐसे मुंह लटका के बैठे हो. ठीक है, excited रहना है. ठीक है, we are going for human development. ठीक है, economic development. There is also a culture of, there's a culture of dole. ठीक है, आज पैसे दे दो, जो freebies हैं, basically the culture of freebies. There's less focus on building capability approach. जो अमर्त्य सेन का concept है, don't give man a fish
टीच हिम फिशिंग। कैपेबिलिटी अप्रोच पे कम है, कल्चर ऑफ फ्रीबीज बहुत है, ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू कीप पेस अप विथ ह्यूमन डेवलपमेंट। देयर इज ग्रेव इनइक्वालिटीज, ठीक है, सो देयर आर ह्यूज इनइक्वालिटीज पर से। हाँ, 1% एंड 70%, सो जो 1% ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 70% ऑफ द वेल्थ। ह्यूमन डेवलपमेंट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया तो इट यू नो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इट बिकम्स एलीट, वो एक्सक्लूसिविटी आ जाती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का काफ़ी लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बाकी अगर जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं है, लाइक कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे यू हैव प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ फंड्स, दैट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज, accessibility gets compromised. So there is, that is why even if we have developed economically, but human development has not kept pace. Okay, that is this one. Okay. Now let me see. So this was 16th. We have what? We have 17th. Okay. Then 18, 19 and 20 is about your society. We have what? From being net importer of From being a net food importer in 1960s, India has emerged as net food exporter to the world. ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि 1960s में we were importing food grain, but now we have become exporter of the food grain. Green revolution, blue revolution, white revolution. ठीक है, talk about building of infrastructure. There is scientific inputs. ठीक है, scientific inputs. ड्राउट प्रोन रेजिस्टेंट सीड्स आए हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आया हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू सेड सम पॉइंट, हाई यील्ड, हाँ वो टेक्नोलॉजी, तो वी हैव इम्प्रूव्ड ऑन सीड्स, वी हैव इम्प्रूव्ड ऑन पावर का अवेलेबिलिटी, तो पावर अवेलेबिलिटी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बन जाती है, तो इनपुट फैक्टर्स हमारे अच्छे हुए, हमने इनपुट फैक्टर्स पे काम किया, सीड्स, पावर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, which has actually contributed to increasing yield. Then there have been great focus on revolutions like green revolution, white revolution, blue revolution. Specifically हमने focus किया specific crops पे, evergreen revolution की बात की, अभी हम food processing की बात करते हैं, yes definitely food processing की बात की है. How do you actually split this? Inputs की बात करो, inputs में हमने कम किए, revolutions की बात करो, फिर आप बात करो post, फिर बात करो मार्केटिंग, फिर बात करो फूड प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग हुआ तो उससे क्या हुआ, शेल्फ लाइफ बढ़ गई, शेल्फ लाइफ बढ़ने के बाद व्हाट यू कैन स्टोर, देयर इज लेस ऑफ डिस्ट्रेस सेल्स, देयरफॉर वी आर नॉट, देयर आर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, अब हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, अब हम सेव करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो यस मार्केटिंग, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, हाँ यस, तो व्हाई हैव वी इंपोर्टेड, यू विल हैव टू राइट क्रॉप स्पेसिफिक एंड यू हैव टू ब्रेक लाइक दिस, कि हमने हर लेवल पे, कि हमें अगर प्रॉफिट, अगर मुझे एक्सपोर्ट कर रही हूँ, यानी मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मुझे एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ानी है, तो उसके लिए मैं क्या क्या पैरामीटर्स कर सकती हूँ, जो भी मेरी यील्ड है उसको सेव करना है, उसको कंजर्व करना है, हाँ वेरी गुड, यस इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली दिस, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, बेसिकली इनपुट फैक्टर्स तो है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, इन द फॉर्म ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ दी लैंड रिफॉर्म्स, वो भी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, so you'll have to think about input factors, you'll have to think about institutional factors, you'll have to think about technology related factors, market related, technology में R&D आ गया, marketing related factors, तो इन सारे factors पे हमने काम किया हुआ है, and then you have also climate smart agriculture, इसको अलग से भी कर सकते हो, marketing and post, ठीक है, तो we have actually emerged, सबसे important role रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन, इंडिया हैज प्राइवेटाइजेशन, ठीक है फाइन, ठीक है, तो यू विल हैव टू टॉक अबाउट दोस फैक्टर्स, राइट, तो आई बिलीव बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं दे आर योर सोसाइटी, आई थिंक हिस्ट्री हैज बीन कंप्लीटेड, हिस्ट्री हैज बीन कंप्लीटेड, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर देयर अबाउट योर दिस थिंग, सोसाइटी 1, ठीक है, तो आई हैव ट्राई टू केप्ट इट लिटिल स्वीट एंड सिंपल, ठीक है, ताकि आई डोंट वांट यू सी यू ड्रूपिंग अराउंड, यहीं पे मिलोगे ऐसे,
वन लेसन, नो ईच कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके बाद स्टोरी लाइन दिमाग में बननी चाहिए कि मैं कैसे इसको एड्रेस करूंगी, क्या डायग्राम में लिखूंगी, क्या बॉडी में लिखूंगी, कितने पार्ट्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चरिंग। थर्ड इज यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ एक्स्ट्रा लिखो, उसके लिए आपको डायमेंशंस ओपन करने आने चाहिए। इफ यू गेट टू नो दिस, उसके बाद प्रीलिम्स का फैक्ट्स का नॉलेज यूज करने आना चाहिए। इफ यू गेट दीज 4 थिंग्स इन योर हैंड, you can start writing any answers that is given to you. I'll repeat. First, you will look at the question. You will know that each word is important. You will structure accordingly. Storyline बनाओगे. Second, dimensions पे ध्यान देना कि सिर्फ एक ही dimensional answer तो नहीं लिख रही हूँ, और फिर prelims वाला जो facts है, जो knowledge है, जो examples है, उसको utilize करना. That is it. और storyline पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा कि confusion क्या होगा. Way forward होगा, summarization होगा, futuristic होगा या क्या होगा. ठीक है. I'll let you know. ठीक है. So I think I'll keep it here. Thank you so much. Thank you for being patient.